Hello everyone and welcome you all in this next class, and today we are going to discuss an introduction to limit state method. And if you see the introduction to limit state method in the IS code, I think you must be aware with this IS code, IS 456. It is very easy to remember also. It is the Indian standard code, that's why it is named as IS 456 2000, and this is the code of practice for any design of member in different situations. So it is written in the section 5 of IS code, the introduction to limit state. So from there we have written these statements. So it talks of a limit state. सबसे पहले ये लिमिट स्टेट की बात करते हैं. Limit state is a state or condition in which what happens, the acceptable limit for the safety and serviceability requirements before failure occurs. So we are imagining just a state or a condition in which the failure of the structural component has not happened yet. अब अभी फेलियर हुआ नहीं है, तो उस सिचुएशन में बी टॉक ऑफ कितना एक एक्सेप्टेबल लिमिट तक हम जा सकते हैं, उस लिमिट तक जब तक कि हमारा स्ट्रक्चर दो रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता रहे. क्या क्या रिक्वायरमेंट है? पहली रिक्वायरमेंट है सेफ्टी की, दूसरी रिक्वायरमेंट है सर्विसिएबिलिटी की. ये दो टर्म्स मैं बार बार यूज करता रहूँगा लिमिट स्टेट मेथड में. द एम ऑफ डिज़ाइन इज दैट स्ट्रक्चर विल नॉट रीच अ लिमिट स्टेट. ये लिमिट स्टेट जस्ट हमारे माइंड में होती है, and be designed that our structure do not reach that limit state, and if that reaches there, it almost fails. So limit states shall be provided to ensure an adequate degree of safety and serviceability. What is safety and serviceability? Just wait, I will explain it in very detail and precisely to you. Hence, design should be based on characteristic value of material strength and applied loads. देखिए, कोई भी केस में अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ें हो रही होती है. एक तो कुछ कॉज होता है और उस कॉज के कारण कुछ इफ़ेक्ट हमें दिखता है. तो एक स्ट्रक्चर की बात करें, अगर ये स्ट्रक्चर है, अगर इसमें मुझे कुछ इफ़ेक्ट दिख रहा है कि ये थोड़ा सा बेंड हो रहा है, तो कॉज क्या होगा? कॉज होगा कि उस पर लोड लगी है. तो देयर आर टू थिंग्स, कॉज एंड इफेक्ट. कॉज क्या होता है? लोड. इफेक्ट क्या होता है? डिफ्लेक्शन. यही दो चीज़ें होती है और इन्हीं दो चीज़ों को हमें डिज़ाइन करना होता है. तो लोड के केस में हमें क्या लेना है? कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ अप्लाइड लोड विच इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक लोड. एंड इफेक्ट हो रहा है डिफ्लेक्शन. एंड डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है? आपने कितना ज़्यादा लोड लगाया और मटेरियल की कितनी कैपेसिटी है, यानी मटेरियल की क्या स्ट्रेंथ है. तो मटेरियल की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम डिफ्लेक्शन होगी. तो मटेरियल स्ट्रेंथ के लिए क्या यूज करना होगा? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ. सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू द कैरेक्टरिस्टिक लोड and characteristic strength in detail. So you have to wait till that. Now the next thing written is that the design value are derived from the characteristic values through the use of partial safety factor, and partial safety factor I will also cover in the next video. One for material strength and other for loads. So from here we can understand that there is something called as characteristic strength, and similarly there is something characteristic loading, and similarly there is something known as gamma strength, which is the partial safety factor for strength of material, and there is also gamma loading, partial safety factor for loading. तो ये चारों टर्म्स को मैं अगले क्लास में डिस्कस करूँगा, ये दोनों और ये दोनों. ठीक है. सो लेट अस कम टू द पॉइंट ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसिएबिलिटी. ये दोनों को हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो वी वुड लाइक टू डिस्कस इट इन डिटेल.
So if you talk of IS 456 2000, what does it recommends us? It recommends to use limit state method design philosophy for designing. Limit state method is also represented as LSM. So just now, as we have seen in the introduction of LSM, that LSM is the design of a structural component for the limiting state in which the structure has not failed, and at that limit state the structure is satisfying the conditions and requirement of two things, safety and serviceability. तो इन्हीं दोनों रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए लिमिट स्टेट मेथड को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया. ठीक है. द फर्स्ट टाइप इज लिमिट स्टेट मेथड ऑफ सर्विसिएबिलिटी. सर्विसिएबिलिटी कहने का मतलब है कि जब आप बिल्डिंग में रहने लग चुके हो, देन हाउ मच बिल्डिंग इज सर्विसिएबल. मीन्स इज देयर क्रैक्स डेवलपिंग इन द बिल्डिंग और डिफ्लेक्शंस आर कमिंग इनटू द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स. क्या छत झुक गई है क्या, या कॉलम्स डिफ्लेक्ट कर चुके हैं अपने एक्सिस से. एंड ऑल्सो इज कॉरोजन अकरिंग इन दी reinforcement bars. So this talks of service life. सर्विस लाइफ किसी भी बिल्डिंग की होती है. इट इज़ टॉक ऑफ नेक्स्ट 25 ईयर, नेक्स्ट 50 ईयर्स, 100 ईयर्स, 200 years, like that. This is the service life of any building. So this is called the limit state method of serviceability. So there are many conditions that has to be satisfied when you are going to design a component, and those conditions are the conditions of serviceability. सो अगर आप अपने कोर्स को देखो तो बहुत कुछ नहीं है डिस्कस करने के लिए लिमिट स्टेट मेथड ऑफ सर्विसिएबिलिटी में. ना ही IS 456 में इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से चर्चा है. ये बहुत ही आसान है लिमिट स्टेट मेथड ऑफ सर्विसिएबिलिटी को चेक करना. इसमें 2-3 क्राइटेरिया आपको चेक करना होता है. डिफ्लेक्शन की क्राइटेरिया होती है, और क्रैक्स को हम चेक नहीं कर रहे होते हैं, सर्विस लाइफ को उतना चेक नहीं कर रहे होते, कॉरोजन को उतना चेक नहीं कर रहे होते. But in our syllabus or in our course and also in IS 456, the second type of LSM is very widely explained, and that is the condition of safety. This is the second type, and this is called limit state method of collapse. देखिए इसमें collapse word यूज हुआ है, safety नहीं हुआ है, पर आप इसे समझ सकते हैं. ये आपके टाइप इससे सेफ्टी से का ही एक पार्ट है. So in this limit state method of collapse, we are going to check the design of a structure for different requirements, different conditions, in which we assume that a structure has almost collapsed. और collapse किस किस कारण से हो सकता है? Due to different kinds of loads coming onto it, and different loads can be of different types. क्या क्या टाइप्स ऑफ लोड हो सकते हैं आप ही बताइए. एक तो हो सकता है फ्लेक्सरल लोड. फ्लेक्सरल लोड मैंने बताया आपको, जब ट्रांसवर्स लोड लगती है जिसमें कि बेंडिंग हो जाती है बीम की. दूसरा क्या हो सकता है, लोड कैन बी अ टाइप ऑफ शियर लोड, और लोड कैन बी अ टाइप ऑफ टॉर्जनल लोड, एंड ऑल्सो द लोड कैन बी अ टाइप ऑफ कंप्रेसिव लोड. सो दीज आर द फोर conditions, and this is very clearly written here that we are going to study in the entire course all these four important requirements of limit state method of collapse. All these are the four different requirements of limit state method of collapse against different type of loading. The first one is the flexural load, second one is the shear load, third one is the torsional load, and fourth one is the compressive load. And in between we will be discussing also on few classes on bond stress and development length. So we will discuss it when the appropriate time will come. And I have also written here the importance of bond in composite. Bonding is very important between the two material in a composite, because if there is sufficient friction between the two materials, then the relative motion between them is avoided. And we have discussed in the previous video, if there is relative motion, then it can be the cause of development of cracks. And when the crack starts developing and propagating in our element is
no more able to resist more loading. So in brief, there are three design philosophies or the three method of design, and they are written here as working stress method, ultimate load method and limit state method. तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड तो आपने पिछले सेम में पढ़ा, लिमिट स्टेट मेथड हम इस बार पढ़ रहे हैं, पर मैं एक और भी मेथड लाया हूँ, अल्टीमेट लोड मेथड. ये क्या है? तो ये एज सच कहीं है नहीं, बट फिर भी वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड के बीच में इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस मेथड देन इट विल बिकम ईजी in understanding the relation between the two. See, working stress method gives us uneconomical section. Uneconomical section मतलब क्या होता है? When you design, then you get a very large cross section. बहुत ज़्यादा cross section, depth ज़्यादा होगी, width ज़्यादा होगी member की, so that the working stress remain less than the permissible stress, and hence the structure remain stable. ये इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर. सो इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड एज वी हैव सीन, द डिज़ाइन इज अनइकोनॉमिकल, ओवर डिज़ाइन, sections is very large. You can see it like this is the design of cross section from working stress method. So if we want to solve this problem of uneconomical section, then we may go for ultimate load design, and this is the ultimate load method, and this method gives us cheaper section. This is a thinner section, but the problem with this thinner section is that its slenderness increases, and I have discussed slenderness in the topic under columns. As if you remember, slenderness is the ability of a column to undergo buckling. If you press a column buckles, so section becomes very slender. Slender means होता है ना thin. So we would like to go for a method of design which gives us an intermediate solution, and that is the design of limit state method. Limit state method gives us economical section between the two sections. So this section is almost appropriate design of section. WSM gives us over design, whereas ultimate load method gives us under design, but the limit state method gives us appropriate economical design of section, and this section is also stable. So we achieve both the requirements, not only economic requirements but also the stability of the structure, which is more important. So as far as ultimate load method goes, we don't discuss it much, but surely in the coming video we will try to discuss the difference between the working stress method and limit state method in a complete class, and we will see what are the merits and demerits in both the methods. Okay, so it is written here that both the problems in WSM and ULM is solved in LSM. क्या क्या प्रॉब्लम थे वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड अल्टीमेट लोड मेथड में? द कॉस्ट एंड द स्टेबिलिटी. वन वाज स्टेबल बट कॉस्टली, अदर वाज cheaper but unstable, but the limit state method gives us economical section with good stability. So before going further, I would also like to discuss in brief load combinations. Just like I have told you, there are two things, cause होता है और इफेक्ट होता है. तो आज हम थोड़ा सा कॉज की चर्चा कर लेते हैं. कॉज क्या है? कॉज इज द लोड, and when the load comes on a structure element, there are different types of load. The first one is the dead load. Dead load क्या होता है? Dead load is the self weight. किसी भी बीम की, किसी भी एलिमेंट की, किसी भी हाउस की अपने आप में इसकी कुछ सेल्फ वेट होती है, and that self weight is the part of dead load. Dead load is also defined as the load which doesn't move, which is the permanent load. It is never going to change.
with the modification until you modify the structure. So a detailed description on dead load, calculation of dead load is given in IS 875 part 1. Actually IS 875 is another Indian standard code, basically divided into various part 1, part 2, part 3, part 4 and part 5. So we don't study these codes in the BTech courses, but this code gives us the ways to calculate the different kinds of loading in different parts, just like it is written here. So the IS 875 part 1 deals with the dead load, and dead load is represented by DL, capital DL. So as you are seeing here, I have written all the different parts of the IS 875 code, and we don't need to go and study these codes and their parts and calculate different loadings. We don't need to do that things separately. एक्चुअली अगर हमें डिज़ाइन करना होगा तो हमें क्वेश्चन में ही दे दिया जाएगा कि डेड लोड इतना है, इम्पोज्ड लोड इतना है, तो हमें ये IS कोड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस IS 456 ही पढ़ना है. ठीक है, एंड वी कैन टेक अ रेफरेंस फ्रॉम IS 456 anytime, anywhere, even in the exam we provide it. And since the exams will happen from the home, so you can take the help of notes also, no problem. And the second type of load is the imposed load. Imposed load को हम IL से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल IL से. imposed load का एक और नाम है लाइव लोड, and this comes in IS 875 part 2. Imposed load are those temporary loads which is placed into the structure when the structure comes into the service or in the working condition. Then what happens, we keep many furnitures or many fixtures and fittings we do in the home as building services. So all those kinds of load, just like in your classroom there are benches and tables, so all that kind of load comes into the live load. Even we humans also or any occupants come into the live load. Third is the wind load, and these are the loads, third, fourth and fifth. These are the environment load. They depends on the environmental condition. So the third is the wind load. It is represented WL part 3, and we will learn the calculation of wind load in the next course of architectural structures. Then comes the snow load, and this is the part 4. Specifically it happens in the cold countries. Then comes the earthquake load. It is represented by EQ, and this is discussed in part 5. One very important thing that I want you all to note, that wind load and earthquake load never acts simultaneously. So this you have to note down in your notebook. अगर हम लोड कम्बिनेशंस अगर हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो कभी भी विंड लोड और अर्थक्वेक लोड को सेम कम्बिनेशन में ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज दे नेवर एक्ट साइमल्टेनियसली. सो आई हैव ऑल्सो लिस्टेड different load combinations as suggested in the IS 456, and this you can check. If you have IS 456, you can check in the table 18. So here I have opened the page number 68 of IS 456 2000, and you are seeing the table 18. You can yourself check in your home, table 18, and it has the list of पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा एफ फॉर लोड्स. सो ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो आप गामा एफ देख रहे हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा. सो दीज आर द लोड कम्बिनेशन इन द फर्स्ट कॉलम, एंड यू कैन सी हेयर DL प्लस IL, डेड लोड प्लस इम्पोज्ड लोड, एंड बोथ हैव टू बी मल्टीप्लाइड विद द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा एफ इक्वल टू 1.5. ठीक है, और यहीं से रेफरेंस लेकर के मैंने पहला लोड कम्बिनेशन यहाँ पे आपके सामने लिखा है, 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 इन्फ्लुएंस लोड. द नेक्स्ट लोड कम्बिनेशन इज डेड लोड प्लस इम्पोज लोड प्लस विंड लोड. और इसके लिए अगर लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स के अंदर देखें, क्योंकि दूसरा भी कंडीशन दिया हुआ है लिमिट स्टेट मेथड ऑफ सर्विसिएबिलिटी, हमें चेक करना है इसमें.
तो इसके अंदर देखें तो क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है 1.2 सभी के लिए. सो फ्रॉम हेयर वी हैव रिटन द नेक्स्ट लोड कॉम्बिनेशन विच इज 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस इम्पोज लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड. मैंने जैसा आपको बताया विंड लोड और अर्थक्वेक लोड कभी भी एक साथ नहीं लगता है. फ्रॉम वेयर आई हैव टोल्ड यू दिस, you can note this from here. Point number 1, while considering earthquake effects, substitute earthquake load for wind load. Just write down this line from this table. While considering earthquake effects, substitute earthquake load for wind load. Okay, the next load combination is dead load plus wind load. And इसके लिए क्या है, partial safety factor 1.5 and 1.5. So we can take it here also. 1.5 dead load plus minus 1.5 wind load or earthquake load. Similarly, there is another load combination also written here from that table 18 of IS 456. So one last thing that I missed you to tell while explaining you the limit state method of collapse and limit state method of serviceability is that limit state method of collapse is based on imaginary behavior of a structure. ये उस बिहेवियर की बात कर रहा होता है जो कि इमेजिनरी है. स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट गोइंग टू कोलैप्स अगेंस्ट द लोडिंग, एंड लोडिंग कैन बी फ्लेक्सुरल लोड, shear load or torsional load or compressive load. Whereas the second condition, limit state method of serviceability, is based on actual behavior of a structure. Because if we check the requirements of LSM of serviceability, then we just see that it checks the deflection criteria, और इसमें हम actual length लेते हैं और actual cross section size लेते हैं. So we don't go for an imaginary behavior of a structure in the LSM of serviceability. So I think this must be sufficient for you to understand the introduction to limit state method and also the different types of load combinations. So in the next video I would be discussing characteristic strength and characteristic load. Along with that I would also discuss the partial safety factor for material and partial safety factor for the loading. So till that, stay tuned and thank you.